Do we laugh less because it's so simple to be happy, but so difficult to be simple? So I think simplicity is the most complex thing to achieve. वाह वाह वाह, मैं लिख लेता हूँ आशु जी। ये एक रीजन है क्या कि हमने हमेशा कॉमेडी को एक निचले दर का जॉनर जॉनर माना है, इसलिए कभी उसको रेस्पेक्ट नहीं दी है। बिकॉज ऑफ दैट वो कॉमेडी मरा है। Everybody can't do comedy, but most people can make you cry. Comedy is the toughest thing. If you can't do it, I mean, I don't think you're a complete actor. नमस्कार आशु जी, सौरभ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। हाँ, हम बहुत बढ़िया हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिसनर्स भी बहुत बढ़िया हैं। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। And I hope that they enjoyed all those episodes जो हमने पठान पे, फर्जी पे बनाई थी। हाँ। तुम भूल गए कि हमने ऑस्कर पे भी किया हुआ था। हाँ, क्योंकि मैं नाटू नाटू पे नाच रहा था ना आशु जी, इसलिए मैं भूल गया। हाँ, तो आज शाम हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही दिलचस्प है और एक तरीके से इट्स आल्सो वरिंग। Where has comedy disappeared from Indian cinema, or shall I say Hindi cinema? Is it only Hindi cinema or is it all over? Where has good comedy writing, acting, timing, where has it disappeared? Over to you, Saurabh. First of all, I want to tell that ये जो टॉपिक है ये आया कैसे? So I was watching this show. It's a recent comedy web series. It's streaming on Disney Plus Hotstar, I guess. वो शो का नाम है पॉपकॉर्न है। वो शो लिखा है फरहाद सामजी ने। एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट शो। फर्स्ट एपिसोड 15 मिनट मैंने देखा, मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने बोला मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि द कॉमेडी, द पंच लाइन्स, एवरीथिंग वाज सो सिली। और ऐसा लग रहा था कि एक 8 साल का बच्चा लिख रहा है। एक्चुअली 8 साल का बच्चा इससे अच्छा लिखता है। एंड आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड आल्सो कि अरे यार, पहले कितने अच्छे कॉमेडी शोज बनते थे, कॉमेडी फिल्में बनती थी, कितने अच्छे डायलॉग राइटर्स हुआ करते थे। अब क्या हो गया? बिकॉज इंटरेस्टिंगली इन पॉपकॉर्न शो देयर इज जॉनी लीवर, सौरभ शुक्ला, राजपाल यादव, चंकी पांडे, कुणाल खेमू, मतलब स्टार। सतीश कौशिक, सतीश, अरे सॉरी, लेट ग्रेट सतीश कौशिक जी भी है। मतलब इतने बड़े बड़े धुरंधर एक्टर्स है, होने मतलब एक्टर्स होने के बावजूद भी ये क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है हमें। सो वहां से ये टॉपिक इजाद हुआ। एंड नाउ आई एम विथ यू टॉकिंग अबाउट दिस। आपको पता है ना कि ही सपोज्ड टू बी डायरेक्टिंग हेरा फेरी 3। हाँ, वो ही खतरा है। आई एम वरीड एक्चुअली। एंड इंटरेस्टिंगली आशु जी, उस पिक्चर का नाम हेरा फेरी 3 नहीं है, इट्स कॉल्ड हेरा फेरी 4। एंड आई एम नॉट जोकिंग ऑल्सो। ओके, क्यों? जो थर्ड पार्ट है उसका टाइटल है हेरा फेरी 4। क्यों? क्यों? एक रीजन है एक्चुअली, बहुत वियर्ड सा रीजन है। 2 और 4 के बीच का हेरा फेरी है हेरा फेरी 3। ओह, अच्छा। ब्रेकिंग न्यूज, दददन दददन दददन। तो नलिनी जी, ये है जवाब आपके सवाल का। आपने पूछा ना कि कॉमेडी डिसअपियर हुआ है क्या हिंदी सिनेमा से, तो हेरा फेरी 3 जैसे डिसअपियर हुआ है ना, ऐसी कॉमेडी भी मुझे लगता है धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। मिस्टर इंडिया बन रहा है। सौरभ, एक बात बताइए, आपने कहा कि पॉपकॉर्न करके एक शो आपने 15 मिनट तक देखा है। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, पर उस वक्त व्हेन यू टुक द नेम ऑफ दैट शो, you know, it reminded me, I saw a tweet of a common friend of ours, and that person actually never puts out such angry tweets. I mean, he's quite upfront, we know him, but his tweet about popcorn was really angry. It went to the extent of saying that why is this industry still giving Fahad Samji work? Why are we tolerating this? And the subject was popcorn. And today you're talking about that show. But tell us, Saurabh, what was so wrong with it that in 15 minutes you stopped watching? आई विल टेल दैट ऑल्सो। और नल्ली जी, वो जो कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने भी 15 मिनट ये शो देखा था। उसके बाद का एंगर है वो, जो उन्होंने ट्विटर पे दिखाया। Oh gosh. हाँ, सो
I will give you an example. The quality of humor in that show. मैं आपको एक example देता हूँ. Actually दो example है. एक example ये कि there's a scene in the show in the first episode where this character Nupur Sanan's character, she hates the word no. उनको नो शब्द से नफरत है. तो उनको एक बंदा मिलता है, वो बंदे का नाम रहता है नौशाद. तो बोलती है कि आपसे तुम्हारा नाम होगा यश शाद. My God. Oh no, what are you saying? You cannot say no. Nupur doesn't like no. So, oh yes, what are you saying? Oh, और एक एग्जांपल देता हूँ. ये जो जोक है, हमने तीनों छोड़िए, मुझे लगता है पूरे इंडिया में ये जोक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. और वो जोक ये है कि माय फादर निबंध लिखना था, मगर उस दिन सॉरी माय फ्रेंड निबंध लिखना था और उस दिन माय फादर मिल गया आपको. तो वो जो रट्टा मार के आया था वही लिख देता है, बस फ्रेंड के जगह फादर लिख देता है. आई हैव मेनी फादर्स. ये जोक है इस शो में. oh, मतलब इतनी कमी है कॉमेडी की, ह्यूमर की इतनी कमी हो गई कि हम बचपन के जोक्स जो हम एक दूसरे पे मारा करते थे वो यूज कर रहे हैं. पर ये वो फादर वाला तो मुझे याद है, कुछ कुछ मुझे हंसी इसलिए आ रही है. बट ये नौशाद वौशाद, ओ गॉश सौरभ, दिस इज एब्सोल्युटली टेरेबल. वही नलिनी जी, आपको याद है क्योंकि ये बासी हो चुका है, पुराना हो चुका है. ये 2023 में आप एक ओटीटी में वेब सीरीज में दिखा रहे हैं. हे भगवान. इतना सिली ह्यूमर. आशु जी, आपने तो नहीं देखी होगी पॉपकॉर्न, इसलिए आप बिल्कुल ही खामोश हैं. मैं खामोश. मुझे लगता है मेरी सेंसिबिलिटीज भी शायद इसी वजह से इंटैक्ट है. बट कारण क्या है आशु जी, कारण क्या है? क्यों हमारे यहाँ बहुत अच्छी कॉमेडीज बनती थी आशु जी, बहुत ऐसा नहीं कि we didn't have good writers. I mean, we had Neeraj Vora, before that we had Kader Khan, we had such lovely writers. What has happened? No, we still have very good writers. Ashuji, do you think comedy genre is dead in Bollywood now, right now? So I'll tell you, I don't think comedy genre is dead. I'll tell you, I have a very different take to it. My thing is, and I don't know whether you agree to it or not, but my thing is, पेपर से लेकर के फिल्म तक का जो सफर है ना, उसके अंदर कॉमेडी जो है वो मर जाता है कभी कभी. डू यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि जब पेपर पे लिखी हुई चीज होती है वो इतनी ज्यादा ह्यूमरस होती है, लेकिन उसके बीच का सफर इतना स्ट्रेसफुल होता है, कभी कभी स्ट्रेस जो है वो इतना भरा होता है कि इंसान को लगना शुरू हो जाता है कि ये चलो यार पिक्चर खत्म करें. बट जो जो सौरभ तुम बोल रहे हो ना लाइनों को लेकर के, ये तो राइटिंग का कसूर है. और अगर मैं ये बताऊं कि अगर मैं ये बोलूं कि राइटर्स नहीं है, नो, देयर आर राइटर्स. मतलब रोहित शेट्टी still has the entire theaters in splits when he makes his comedy films, and people are really they lap it up. I mean, But sorry to cut you, Ashuji, but he also failed. Recently, he made a film called Circus. yeah, so that's all right. I mean, you can understand that sometimes it happens where you may not live up to the comedy standards that you've created. हर बार आदमी जाकर के सेंचुरी नहीं मारता है, कभी कभी जीरो पे भी आउट हो जाता है. That's all right. That doesn't mean that he's a bad director. That doesn't mean that he doesn't understand comedy. The comedy is there. I mean, David Dhawan has given such lovely comedy films till today. Priyadarshan has given such lovely comedy films. And I'm not talking about these films which are 30, 40 years back. They are current. We are still talking about Hera Fairy, the next franchise, which was originally created by Neeraj Vora and Priyadarshan. And they've created some very, very good comedy. So point is, these situations become very complicated. Comedy जो है ना टीवी शोज में बहुत कम चलते हैं, कॉमेडी फिल्मों में ज्यादा चलता है. फॉर सम स्ट्रेंज रीजन कॉमेडी इंटरनेशनल शोज में ज्यादा चलते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो बिग बैंग थियरी हो, चाहे वो मॉडर्न फैमिली हो. देयर आर लॉट्स ऑफ कॉमेडी शो, 2.5 Men हो, वहां पे कॉमेडी बहुत चलती है. ये उनके कॉमेडी लिखने का तरीका और यहाँ पे कॉमेडी लिखने का तरीका जो है वो भी बहुत बहुत अलग है. Ashuji, I want to jump in here quickly because you brought up TV and you went to Hollywood, but I want to bring you back to Hindi content. Nandini ji, I am also thinking the same. Yes,
Yeah, it's Ashuji. The tension on the sets. With due respects to everybody, I think comedy starts in the mind of the person who's writing and then gets transferred to the director. And if the writer and director is the same person, well and good. But exactly what you're saying just now, that TV pe chalti hai, is pe chalti hai. Now, since we're talking about this subject, I ventured into a show because I saw that Ratna Pathak Shah is a part of it. It's a very recent release. It's called Happy Family Conditions Apply. This is a classic case, not only of bad writing. It's what kind of acting is this? This is the kind of acting that they do templates in on television. We've all seen what television did. You're first trying to crack a joke, somebody cracks a joke, and then the camera moves to the second person for that reaction, and then it moves to the third person for his reaction, and that is not comedy. There's no timing. Look at this show, it's pathetic. The acting and the kind of actors in it, there's Raj Babbar, there's Atul Kulkarni, there's Ratna Pathak Shah, and I'm sure when these actors, of course, she's good at whatever she does, but I don't think we can even go to compare with Friends or Modern Family, or look at the writing and the timing. And there's actually, those guys are living those roles. Here, we are acting them. But I'm slightly disagree what Ashuji said. Two things. One is उन्होंने कहा कि set पे बहुत tension चलता है. But David Dhawan ने even Priyadarshan when he was making comedies in Malayalam, एक साल में इनकी 4-5 फिल्में एक साथ आती थी और ये 9 घंटे 9 शिफ्ट वगैरह शूट करते थे सेम एक्टर्स को लेके. सो टेंशन तो तब भी था मगर स्टिल दे वर डिलीवरिंग गुड क्वालिटी कंटेंट. Because Saurabh, I think the writing is that. I think it's all in the writing and in the director, and even if I think it's the sensibility. What we think is comedy, like I've just given an example of something which has just come out, Happy Family. That's not even comic. There's nothing comic about it. It's just being stupid and silly. And silly comedies also work, because some of David Dhawan's silly comedies worked because they made you laugh. Andaz Apna Apna is silly comedy. Exactly. Andaz Apna Apna. And how did that, when it came out, it didn't work, but it's a cult film. I mean, why can't people write things like Angur? I don't know. Anyway, sorry to interrupt. Saurabh, you can come in and say, and yeah. No worries, Nandini. Second point Ashuji made was हम television comedy सही से नहीं बनाते. He compared with Friends and other shows. मगर television में तो बहुत quality content निकला है हिंदी से. हाँ, पहले हाँ. तो है जिंदगी start from ये जो जिंदगी 1984. Again they used to do 10 घंटे 11 घंटे शिफ्ट करते थे. Even there is a master class. वो अशोक पंडित जी किस इसके ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है? Film Producers Association. They had a master class where Kundan Shah. Indian Film and Television Director Association, IFTDA. Yes. So वो उन्होंने एक मास्टर क्लास रखा था जब सारे टेलीविजन के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ उनका एक मास्टर क्लास था. उसमें उन्होंने मेंशन किया कि वो 10 घंटे वो सेट्स पे एसी भी नहीं होती थी और वो शूट करते थे. तब भी उनका क्वालिटी देखिए. और so many good content used to be there in 80s and 90s, like shows like Dekh Bhai Dekh, Hum Panch, Filmi Chakkar. Yeah. कितने सारे shows हैं. There was a very sweet show. It was called Mr. Ya Mrs., which had Archana Puran Singh and Jayant Kriplani. Yeah, and that is Reeman Ji, Srimati Ji. No, that was Reema Lagu. Shriman Srimati is Reema Lagu and Archana Puran Singh and that other gentleman. But there was a lovely show which didn't last for very long. It was called Mr. Ya Mrs. Jayant Kriplani and Archana Puran Singh. It was so sweet and funny. Then there was this satirical show by Basu Chatterjee, which was called Rajni, which had a social message, but it was still funny, I think it was written by Vijay Tendulkar. Yes, it was. And his daughter acted in it. And or maybe there were simpler times, sort of. Maybe the times were simpler. That's why we were laughing. Is that? No. What are you saying? No, it's a question. No. It's a question that have we all become too cynical about comedy? Have we all grown up too much that we criticize everything, that we're not able to laugh, or what is it? Because but Nalini, these shows are still relevant. You can still sit and watch. If we had this cynical thinking about comedy, why we are enjoying these shows till now? Flop show is still so relevant.
Flop show is fantastic. I think it comes right on top. Thank you for mentioning it. Exactly. Even Dekh Bhaat Dekh, I can binge watch Me too. all the episodes. 55 episodes are there. मुझे अभी भी याद है कितने episodes हैं. 55 episodes are there. Flop show was another level of satirical comedy. Flop had only 13 episodes, I guess. Still you can watch it. But what's happening now? सो राइटिंग का जो प्रोसेस है, राइटिंग के प्रोसेस में इंसान कॉमेडी अपनी तरफ से पूरी तरह से लिखने की कोशिश करता है टू वॉट एवर लेवल दैट यू कैन. अब क्या होता है ना, जब आप फिल्म शूट करते हैं, द पीपल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड द पीपल बिहाइंड द कैमरा, this is an entire team. Comedy or any other film actually comes the best when the team building exercise is brilliant. What I'm trying to tell you is the reason why these people work with the same set of actors is because इनका team building exercise fabulous होता है. मतलब क्या है कि आप उनको सीन का premise दे दो, जो गोविंदा के लिए बोलते थे कि एक सीन का premise दे दिया और गोविंदा जी उस सीन को उठा देते थे अपनी performances के साथ, टाइमिंग के साथ, उसको कैरेक्टर अंदर डाल करके whatever. I'll tell you what is the most crucial thing in this. कि जब आप शूट करना शुरू करते हो सुबह 10 बजे 11 बजे whenever you start, ये जितने लोग हैं 70-80%, 90% of the time they are always on the set with each other, having lunch with each other, having snacks with each other. लाइटिंग चल रही है तो वहां खड़े होकर के रिहर्सल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वहीं पे सेट पे खड़े होकर के कर रहे हैं. They are doing something. The entire atmosphere is very light and you don't even know that 11 hours have gone past and you worked the whole day and it has just breezed past. So when you enjoy what you do, you don't work at all. Nowadays, talent comes on the set, shot दिया, goes away. फिर उसको बुलाओ, 15 मिनट लगते हैं उसको 20 मिनट आने को, फिर वो आया, उसने शॉट सुना, फिर he goes away. लंच सर्व हुआ तो लंच कोई और बैठा हुआ, ये लोग सब अपने अपने रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं, they come back. ये जो बॉन्डिंग एक्सरसाइज है आपस में मस्ती करने वाला, जो जो एलिमेंट है जिसमें एक दूसरे के नुआंसेस को पकड़ना, जानना, डाल करना, वो सारी चीजें बिकॉज ऑफ लेसर टाइम स्पेंडिंग विद ईच अदर टेंड्स टू डिसअपियर. And now you're trying to forcefully recreate it by that little time that you have. And any time you try to do a forced creation of comedy, it falls flat on your face. And that is where maximum problems happen. And this is the journey that I'm saying from paper to screen becomes extremely labored, extremely stressful. 8 घंटे हो गए, चलिए बंद करिए, पैकअप हो गया, 9 घंटे हो गया, मैं कल टाइम पे नहीं आऊंगा, ये सब चलता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है काम करना. तो इसका सोल्यूशन क्या है? द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, ही शुड. तो इसका सोल्यूशन यही होता है कि व्हाट यू डू इज यू बिल्ड अ टीम दैट यू ट्रस्ट एंड कन्फाइड इनटू एंड यू नो यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ. एंड दैट इज व्हाई यू विल रियलाइज whether it's a Rohit Shetty, whether it's a Priyadarshan, whether it's a David Dhawan, whoever you can name, even all of them are working with the same set of actors, same set of technicians, same set of people, because by then they have all tuned with each other. Even the writer, more often than not, seems to be the same writer. And that's what the whole teamwork is all about. And that teamwork creates the entire atmosphere of comedy, which people then enjoy. That energy is created, which people enjoy. Ashuji, there are two films I'm going to talk about. One very old one. Both are actually pretty old films. One is Jaane Do Yaro, which is a satirical comedy, and the other one is Andaz Apna Apna. And as examples to exactly what you're saying, to extrapolate from where you've taken off, that Jaane Do Yaro, when you listen to Sudhir Mishra and everyone else talking about, even Nasir Saab, everyone else talking about the atmosphere and everything, it was all it was extremely stressful. They had no budgets. They didn't know what they were making. It turned out, half of them didn't believe. At least Nasir Saab, at some point, I've heard him saying that he didn't believe in a couple of scenes, but they just went ahead and did it. And look what came out of it. So, and they make you laugh over a silly dialogue because the way it is delivered, it is so fantastic. It's my favorite dialogue from that film. And it's not even a dialogue. I'm sure they must have improvised while they were doing it. It's that thing where he says, "Thoda cow, thoda peko, thoda cow." I mean, and the other one is Andaz Apna Apna, where Karishma Kapoor and Raveena Tandon were at each other's throats, where Salman and Amir Khan didn't even get along. Amir was very upset because Salman used to come late on the sets. They had absolutely no tuning.
So that's why I brought up this thing about the director, that how did he get that whole thing together for us to be laughing, our guts out at what these people are saying, because they leave all their baggage, they come there, they get into character, they've understood. Tilu ko dande marne hai. I mean, who would have thought that you would laugh your guts out at that? And none of them are talking to each other. They don't even like each other. Saurabh, do you want to add anything? I just thought of these two films because. Yeah, while you were saying na, wo thoda khao, thoda pheko wala scene. Yes. That scene, even not even the dialogue, that whole scene was staged so brilliantly. वो जब थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको बोल के जब फेंक फेंक रहा था, तो वो थोड़ा थोड़ा फेंकता है और उसके बाद वो पूरा खत्म होने के बाद पूछता भी है मजा आया, तो वो लोग बोलते हैं वहां से नहीं. तो I think एक चाह होनी चाहिए, एक meeting of minds of belief, even if you don't believe in the project or whatever, but there is something that you're there. This is what you're being paid for. This is your job. You're supposed to come out there and deliver. And if the captain of the ship is not able to get people to deliver, then where do we go from there? And is that the reason that we are coming to that? Where has comedy gone? Now stars exactly what you said, Ashuji. They don't even get up to take a cup of coffee. It's like you heard Ratna Pathak Shah, you've seen that video, that they don't even, वो कॉफी का कप ही नहीं उठाते खुद. उनका मैनेजर उनके लिए कॉफी ला रहा है, उनके मुंह तक पहुंचा रहा है, so is that why comedy is ending? Or because you're saying there are still good writers? And Saurabh, would you like to add anything to that? I don't have anything to add, but I have a lot of questions in my mind. There are a lot of questions. The reasons I'm searching for the reasons why there is no good quality content in humor in our Hindi films. कि ये एक point है आशु जी ने जो बोला कि actors और directors के बीच में वो उस तरह का chemistry नहीं जो पहले हुआ करता था. This is one point. The other points which I am thinking is, did we stop laughing at ourselves? क्या हम खुद पे हंसना बंद कर दिए हैं, इसलिए हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं. Still in 2023 also we are making joke out of color, these homophobic jokes, age shaming, fat shaming, height shaming, everything is still relevant because did we stop laughing on ourselves? What a brilliant point. And I have had actors on sets who rehearsed like these, and I have realized that I think they're taking themselves too seriously. If you can pull a fast one on yourself, then you have loosened up and automatically the performances become better. If somebody pulls a fast one on you, you can laugh it out rather than get angry at the person. I think it's a brilliant point that somewhere we have sort of lost the ability to laugh at ourselves. That's why you see these kind of raw. But then why would Welcome have been so entertaining? The first Welcome. Yeah, but that too, like it's a decade before. It's 2007. Yeah, But I'm seeing nowadays, I'm seeing this culture of roasting and culture of shaming others and getting a laughter out of it. I'm seeing this trend, and like very brutally, they are doing this. No, but Anis Bazmi has the capacity to make the audiences laugh. He creates situations which are brilliant. He's a writer himself, and he's been writing for so many years. And he's written, of course, he's written thrillers, he's directed comedy, but he's come in centered around something which is action comedy, and he's been able to do a very good job about it. Which was his last film, Anis Bazmi's? Bhool Bhulaiya 2. Oh gosh. I didn't like that film. I mean, I don't know. So now this is the other thing. You know what happens is humor has varied levels of acceptance. What is humorous to me may not be humorous to you. What is humorous to you may not be humorous to Saurabh. But Ashuji, that's true of everything, of anything. But it's all about timing. I think humor is all about timing. Yeah, exactly. It's about timing. Correct. So it's a little tricky a question that Saurabh asks here. Why is comedy in Indian cinema dead? They are trying to rediscover it and trying to create a situation where there are comedy films being made and we create something which is interesting. And I think somewhere down the line over there only there is this big hue and cry about who should helm Hera Pheri's next franchise, because people want to laugh, people want to enjoy that entire series. I don't know. I still would come back to the writing. And of course, as Saurabh says, and we all know, in comedy, you need timing and you need
I don't know, a courage of conviction that what you've written is going to transport itself. And if it's not able to transport himself, then like I said, the writer and the director, it's really up to both of them to get it out and not create nonsense like what Saurabh has just said about that popcorn. And maybe that's why there's this whole hashtag about remove him from Hera Fairy. I don't believe in all these hashtags, but still, people are upset because they do want to laugh. They do. I'm fed up of looking at only crime and gore and sex and gullies. Give me a good comedy, which is what, with good faith, Saurabh, you were saying. I went in to watch Happy Family. I said, oh, at last, a comedy, and it's got Ratna Pathak Shah. So all the more reason that I'll get into it. But then over there, they're trying to please everyone, right? So they've brought in which is fine. You want to send out a message, but then they've got the older son married to a black girl in America. So there's those racist comments are happening, and then how that changes, and then and there's this dialogue in that which says Ratna Pathak Shah is asking this young girl who's I think Supriya Pathak's daughter. She's acting in the film, and she says, "I don't want to get married. I don't like men. All men are the same, and men are WINE. So this is what is WINE, and it says wife is never enough. Okay, so Pathetic. pathetic. Wife is never enough, so I don't want to get married. So then the father says, but you don't want to get married to a man, you want to get married to a girl. So then Ratna Pathak Shah jumps in and says, "Kya tum thespian ho?" So then Raj Babbar is digging at her, and that other girl is digging at her and says, "Kya bol rahi ho, dadi," or something. She says, "Nahi, kya tum thespian ho?" So he says, "Nahi, thespian to Dilip Kumar the." Then she looks at him, at Raj Babbar, and she says, "Dilip Kumar thespian the?" Oh my God. So then that other girl, Aisha Julka, says, Dadi or Mama, or whatever she calls her, says, "Mama, the word that you're looking for is lesbian." And that is supposed to be funny. How? From which angle? That's just poor writing, right? So if you're giving poor writing to the actors, what are they going to do with it? You can't even blame the actors. You can't blame good actors like Atul Kulkarni and Ratna Pathak Shah. You can't blame them. They've got it, they've got work, they're happy to be on a set, which is finally comedy. And then look what they're given to, dialogues they're given to deliver. नलिनी जी, ये जो आपने बताया अभी, इसमें प्रॉब्लम ये है, why the timing is not correct, because thespian itself is a very difficult word. आम लोग वो word use नहीं करते हैं. So when you are mistaken with lesbian, thespian, उधर ही टाइमिंग खराब हो गया. वो जो राइटर वो लिख रहा था, वो सोच क्या रहा था उस वक्त कि मैं ये लिखूंगा और बड़ी हंसी पाऊंगा. जैसे कि बलात्कार, वो चमत्कार, कौन से 3 इडियट्स में एक सीन है. जी. Though that humor didn't aged well, बलात्कार वाला didn't age well, but it had a timing. उस टाइम में like I have to I have to confess that I laughed at that scene. I was a part of that film. I was laughing. I was rolling over my seat laughing at that scene. And Yeah, and not because of that chamatkar and balatkar, because of the timing that actor is giving to you. yeah. The way he says, वो एक timing वो actor ने set किया है, वो deliver करते वक्त. That's why you get that laugh. या सो मैं तो राइटिंग के ऊपर आती हूँ. मैं तो राइटिंग को दोष देती हूँ. मैं अपने आप को दोष नहीं देती हूँ. हम ऑडियंस है और हम हंसना भी चाहते हैं, हम रोना भी चाहते हैं, हम थ्रिलर भी देखना चाहते हैं, और जिनको सेक्स देखना है वो सेक्स देखना चाहते हैं, जिनको गालियां सुननी वो गालियां. तो हमें कंटेंट दो ना, हमें हंसाओ. हम क्यों बार बार वो पुरानी फिल्में देखते रहें हंसी के लिए? अंदाज अपना अपना उठा के जब भी हम when you're feeling in a little low, you pick up and you watch जाने भी दो यारों, or you watch अंदाज अपना, or you watch अंगूर, and you feel so good. And why nowadays these writers have this terrible obsession of rhyming? Rhyme, कुछ भी word rhyme कर दे तो वो मतलब funny है. वो आपकी तरह काफिया बना रहे हैं सौरभ. मेरे काफिया इससे अच्छा है. मुझे तो पैसे भी नहीं मिल रहे. इनको इस बकवास के लिए पैसे भी मिलते हैं. हाँ. So Nalini ji, आशु जी, आप पॉइंट बोले, उससे पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. द ऑब्सेशन विद राइम्स. मैं एक फिल्म देख रहा था, हाउसफुल 3. मत पूछेगा क्यों देख रहा था.
तब उसमें एक सीन है, सो दिस कैरेक्टर रितेश देशमुख कैरेक्टर इज एफेमिनेट, वो उनका बॉडी लैंग्वेज वैसा है। सो कि कोई अक्षय कुमार से पूछता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव करता है, सो अक्षय कुमार इज टेलिंग दैट इसने जेंडर का टेंडर नहीं भरा है। Oh no. Oh no. What are you saying? सीरियसली। Oh no. And see, good that you brought up this point because this is the other thing. You know, when you make fun, and not that they're doing it from now, they're doing it from even black and white films, not of gays and lesbians. But remember that V. Gopal actor who used to stutter on Ashuji will remember. Yes, I know, Gopal. V. Gopal, हर फिल्म में उसको stutter करवा रहे थे. That was supposed to be a joke. I'm telling you quite honestly, I laughed at that Three Idiots thing, and we never laughed at V. Gopal stuttering. We just found it so irritating. In every film, he did that, and we felt quite bad because he was stammering, stuttering, and that is supposed to be comedy. And then, so they were doing it then also. तो and then they वो effeminate हाथ ऐसे गिरता है तो तुम गे होते हो, तुम्हारा हाथ ही ऐसे गिरना पड़ेगा. Nalini ji, there is a legit background score also for these characters. आप वो प्यार किया तो डरना क्या पिक्चर देखिए सलमान खान का, उसमें एक ऐसे ही कैरेक्टर रखे हैं और वो बैकग्राउंड स्कोर भी है, ओ टिटिंग टिटिंग ओ, ऐसा बैकग्राउंड स्कोर भी है। Oh gosh, I've seen that movie, but I don't remember this. Yeah, there is a legit theme music for this character. And they probably think that we are being very woke, you know, we brought in a gender. It's not about being woke, it's a homophobic thing. If you see these old movies 80s 90s, हमेशा हमेशा एक मस्कुलिन हीरो रहेगा और उसके जो दोस्त रहते हैं उसमें एक कैरेक्टर जरूर रहेगा जो एफेमिनेट है। जी, वो राज किशोर करके एक एक्टर था जो शोले में भी था। यस, और उसका शोले में देखिए उसका जो वो जो पहनता है वर्दी, प्रिजनर्स का जो ड्रेस पहनता है, हाँ उसमें लिखा भी है 6। हाँ, आप गौर से देखिए उसमें लिखा है 6। तो हाँ, ये तो तब भी था और तब लोग हंसते थे। अब इन सब बातों पे हंसना मना है। और ये जो एक्चुअली ये जो राइमिंग वाला ट्रेंड है, ये मुझे लगता है पॉपुलर किया कादर खान ने, एंड ही वाज ब्रिलियंट एट दैट। ओलंपिक का पुलिस का केस हो, ही स्टार्टेड दैट। But he was another level of funny. ही वाज सुपर। Yeah. माँ की ममता, बाप की माँ की ममता, लेट मी से इन कादर खान स्टाइल, माँ की ममता और बाप की बाप तो जग गई है। फिर एक और फिल्म में वो उठाया था, वो भी कादर खान ने ही लिखे उसके डायलॉग्स, कि वो आई थिंक शक्ति कपूर कहता है सत्ते पे सत्ता में, नहीं सुधीर 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 कहता है कि जब बापता नहीं हो सकती, माँ की ममता होती है तो बापता नहीं हो सकती, तो वो सुधीर कहता है उसमें, उसमें भी है ये डायलॉग। Yeah, so, yeah, this dialogue is from सत्ते पे सत्ता। अच्छा, I thought you were talking about another film where he had used it the same time. No, no, I am just mimicking कादर, वो मुझे बहाना चाहिए मिमिक कादर खान को। I think he would have explained like this ना, कि सुधीर ऐसे बोलो माँ की ममता। लेकिन वो सुधीर, तुम इतना अच्छा करते हो सौरभ, बहुत अच्छा करते हो, और उनपे एक एपिसोड भी करेंगे, पर वो सुधीर उस कादर खान की आवाज में नहीं करते, सुधीर तो अपने चिल्लाते हुए कहते उस पूरी फिल्म में, बाकी ममता, बाकी ममता जान। हमारी हिंदी फिल्मों में तो एक, और पता नहीं साउथ की इतनी, सौरभ को ज्यादा पता होगा, लेकिन हमारी फिल्मों में एक पूरा दौर आया था कि इतने गंदे से डबल मीनिंग डायलॉग्स होते थे जिसपे लोग हंसते थे उस वक्त। इवन कादर खान ऑल्सो, कादर खान ने इंटरव्यू में बोला भी है कि डबल मीनिंग वाला ट्रेंड भी मैंने ही शुरू किया था। सो वन मोर क्वेश्चन आई लाइक टू आस्क यू बोथ, वो क्वेश्चन मेरे लिए भी है। द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ह्यूमर इज लेस इन फिल्म्स, इन हिंदी फिल्म्स, बिकॉज देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स टू लाफ, टू वॉच एंड लाफ, लाइक टेलीविजन, सोशल मीडिया, मीम्स, रील्स, स्केचेस, यूट्यूब स्केचेस वगैरह वगैरह है, और स्टैंड अप कॉमेडियंस भी अभी आ गए हैं बहुत सारे। तो आपको लगता है कि जो वहां नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ मिल रहा है? नहीं, पर वहां क्यों नहीं मिल रहा है, वहां क्यों नहीं मिल रहा है, उसका तो आंसर नहीं मिल रहा ना। हाँ, उसके बारे में तो हम, तो वहां क्यों नहीं मिल रहा है में भी ये जुड़ता है। वहां इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अच्छे कंटेंट यहाँ मिल रहे हैं। तो आपको लगता है, ये सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन,
So do you think other platforms are there? That's why humor is reduced in cinema. I actually am the wrong person to answer that question because I don't watch anything. I've never been fond of stand-up comedy. The only stand-up comic I have really admired and liked in my life is Eddie Murphy, and after that it was over. So I don't like. But so maybe Ashuji can take over. And I don't watch a lot of these reels, and I'm not constantly on social media. So I'm the wrong person. I can't answer this. Ashuji, over to you. So I think, laughter is not something that you can get enough of. You cannot say that यार मैं इधर हंस गया, इधर हंस लिया, इधर हंस लिया, मुझे फिल्मों की हंसने की जरूरत नहीं, या मुझे फिल्मों में हंसी नहीं मिल रही इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ. Honestly speaking, मुझे 90% स्टैंड अप कॉमेडियंस की कॉमेडी ही नहीं लगती. I have never laughed. Bilkul, I agree. I've never laughed. I don't know what is this universe that they create where the audiences laugh and they laugh. So, I mean, उनको humorous लगता है, वो लोग हंसते हैं, मुझे हंसी नहीं आती है. क्योंकि मैं देख करके, I'm just trying to figure out what is this line, what was this punchline that they tried to create to laugh? I can't understand. But Nalini ji, I agree with you also that, the other element is obviously, it's not only writing. Yes, but writing also is a problem. We are not getting enough writing to get that kind of humor. So there is the conception, then there is the execution. The conception is where the writing and everything comes in, where you conceive the scene, you conceive the lines, you conceive the characters, you conceive the chemistry of the characters amongst themselves. And then comes the execution part. Then the execution also is another place which actually should take forward from what has been written and raise the level so that you can add on to it, add value to it, and make it interesting. And believe me, I have seen this also, that many a times after the magic has happened on set, many a times the magic tends to lose in editing or on background. I have seen it myself where the timing of the sequences is lost on the edit. So the timing is of essence not only from writing, it goes right up to background music and later on to evoke that laughter. Also, there's another thing. What happens, I know this is, I mean, we're just trying to search. We can't really say for sure that this is where the problem is. This is a combination of a lot of things. But what happens is, imagine I tell you a joke today, then I tell you the same joke tomorrow, then I tell you the same joke day after tomorrow, then I tell you the same joke for the next 6 months, constantly. Will you laugh? It depends how you say it, Ashuji. It will depend entirely on how it's told because there are jokes that you laugh multiple times. The examples which we gave, the movies, Exactly. that we have seen so many times. Jaane bhi do yaar, same joke. Yeah. And you're still laughing. You're still laughing at Angur, Preeta Man Milo. You're still laughing, Yeah, but you're not watching it every day, 24 hours around the clock. Nothing we watch every day, 24 hours. Yeah, Ashuji. No, so I'm coming. No, so I'm coming to that. That a filmmaker is doing this 24 hours, no, 12 hours a day, every day for the next 8 months, every single day. So what happens is when you do this so many times, you lose perspective. You tend to lose perspective, and I can tell you, not 9 out of 10, 10 out of 10 filmmakers by the end of the film will say we have lost perspective whether this is working or not. We want reaction from people who've not seen it before to understand whether it's working or not. Not 9 out of 10, 10 out of 10. So what I'm saying is there are certain people who have now gained expertise in understanding the timing of that laughter and can evoke it and manage it, but most of them cannot, and that is where also you lose the laughter, and that is where you lose the comedy also. So I'm just saying that there are multiple things. Writing is definitely the beginning of it, but writing to execution is also where you tend to lose the emotion somehow. And yes, you're right, we are making lesser comedies because we are not capable of producing more comedies. But the fact of the matter is that if we are not getting humor here, it's because we are getting more humor in a stand up or in reels or in memes. That is something I don't agree with necessarily. Yeah, me neither. And I'm coming to a question I want to ask Saurabh. Saurabh, I want to ask a question to you since you brought up this question also, and then obviously you can complete what you were saying. Is it also because we have gotten used to, not we as an audience, but oh yeah, maybe we as an audience as well, we are equally to blame, that we are celebrating mediocrity everywhere we go?
कि चलो यार ये चलता है, चलो थेस्पियन और लेस्बियन को राइम कर दो, लोग हंसेंगे। तो मीडियोक्रिटी इतनी हमने सेलिब्रेट की है पास्ट में, और क्या उस वजह से भी कॉमेडी नहीं है? That's a very good question. Huh? That's a very good question, Nalini ji. I think to some extent, yes, mediocrity is also to be blamed. We celebrated mediocrity. That's why we get that quality of humor, and we also compare like with when we get a mediocre content and when we celebrate it, we try to compare that with very low class content. अरे इससे तो अच्छी है यार. That's why भूल भुलैया 2 worked because उस वक्त कोई अच्छी पिक्चर ही नहीं बनती थी. अभी भी कमी बन रही है अलग बात है, बट उस दौरान वो लॉकडाउन के उस दौरान वी वर नॉट गेटिंग एनीथिंग टू गेट एंटरटेन्ड. लाफ्टर तो दूर की बात है. So that's why we celebrated Bhul Bhulaiya too. I mean the audience. मैं एक और चीज ऐड करता हूँ. क्या होता है ना, जो फिल्म मेकर है ना, वो सक्सेस रेट फॉलो करता है, देखता है, वो ट्रैक डाउन करता है हिस्ट्री में, और अगर उसको लगता है कि ये चीज चल रही है ना, तो उसको लगता है ये ही चलेगा, तो वो भी फॉलो अप करके वैसे ही चीजें बनाते रहते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली उसी किस्म का फ्लो आता रहता है. सो इसीलिए वो मीडियोक्रिटी का जो चक्कर है, वो you get it in thick bands rather than thinner bands, and very few people are in a position to rise above that and make you, sort of interested in their comedy. So that's a dangerous trend when people start following कि ये देखो, ये इस ह्यूमर पे चला ना, तो ऐसा ही ह्यूमर लिखो. इस पिक्चर में ये चला था ना, ऐसे ही काम करो, ऐसा ही लिखो, ऐसी ही एक्टिंग करो. ये बहुत चलता है इंडस्ट्री में. हाँ, भेड़ चाल जिसको कहते हैं ना, पुराने जमाने से भी भेड़ चाल ही थी. बट एक चीज और है सौरभ, आशु जी, कॉमेडी के हवाले से, नॉट अभी पिछले 5-6 सालों में हम देख रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद तो बहुत ही देखा है हमने कि ये जो इवेंट वाली फिल्में हैं ना, ये तो बहुत चल रही हैं जो भी है. तो एक तो कॉमेडी अगर आप थिएटर में जाओगे देखने के लिए, तो लेट्स से आज की डेट में कोई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोहित शेट्टी एंड दीज बिग producers who get lots of budgets to make these comedy films, which are also not out and out comedy. They have other stuff as well. His uh, uh, you know he made Chennai Express, and वो चल गई. Happy New Year was such a bad film, पर वो चल गई. तो आज की डेट में क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी बहुत हो गया थिएटर में जाने के लिए, तो ये लोग सोचते हैं कि ये तो अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज करेंगे, ये तो छोटी मोटी कॉमेडी है, चलो. वहां के लिए बना भी नहीं रहे हैं, थिएटर्स के लिए लिख भी नहीं रहे हैं, ये सोच के कि who's going to come to the cinema hall to spend $500 on a comedy? Is that also one of the things? Or who's going to come to the single screen theaters to watch a comedy film when they'll actually go to watch an event film, a Salman film, or any of these recent successes that we've had? Is that also a reason that they're not even giving attention? I don't agree to that. There are 2 reasons. Okay. One reason is people want to laugh. People want to get out and watch a comedy film and laugh. Right. Collectively. Right. Second point is during lockdown, when lockdown was in peak, the second wave, that time एक तेलुगु पिक्चर आई थी with non-established actors, और वो 50 करोड़ से ज्यादा कमाई थी, and that is जाति रत्नालू starring Naveen Polishetty. That was a blockbuster movie, and it was out and out comedy, silly humor, अंदाज अपना अपना स्टाइल की. अच्छा. और वो लोगों ने बहुत पसंद की थी, और वो लॉकडाउन के टाइम में आई थी. मुझे याद है अप्रैल 2021 में शायद, एकदम सेकेंड वेव एकदम हिट जब किया था, उस टाइम में आई थी शायद. अच्छा. तो मुझे नहीं लगता ऑडियंस लव टू वॉच कॉमेडी मूवीज. अच्छा. लॉकडाउन में भी लोग क्या कर रहे थे? दे वर वॉचिंग ऋषिकेश मुखर्जीज मूवी, प्रियदर्शन's मूवी, डेविड धवन's मूवी. Even you see the question which I asked कि सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं. Even in social media, the memes which are created, they are created with these yesteryear comedy movies. Yes. अबे जल्दी बोल, सुबह पनवेल जाना है, ये कॉमेडी फिल्म का, ये एक मीम है. Yes. मगर ये कॉमेडी सीन है एक फिल्म का. अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू, ये भी एक मीम है, ये भी एक फिल्म से है. So we are thirsting for good comedies. People listening to this podcast, any filmmakers, writers listening to this, please give us what we're thirsting for. And what's happening in internet, the humor, I think there are many good quality humor happening there also. Like TVF is doing a very good job. उनके जो पुराने sketches थे back in pre-Geo era,
जब इंटरनेट लोग ज्यादा यूट्यूब में स्केचेस देखते नहीं थे, तब से वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं कॉमेडी में। वो तो बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनको भी कितने साल हो गए। इट्स नॉट अ फनी सीरीज पंचायत, but look at the subtlety in that, the comic things. You laugh, right, when those people are talking amongst themselves, those two assistants, and they're talking to Jitu Bhaiya. It's not, so it's again the writing where you feel it brings a smile on your face. You're not laughing out loud, but it brings a smile, or the interactions, again the writing, the timing, the way they look at each other, and you just feel like laughing, you know. And some of the dialogues, वो लौकी लेके घूमते रहते हैं रघुवीर यादव, हर एक को लौकी थमा लेते हैं, वहां पे भी आप को थोड़ी सी हंसी आती है, हालांकि वो जी, सिर्फ इवन नॉट ओनली पंचायत, गुल्लक उन्होंने बनाई है, जो कितनी सिंपल एक 90s सिटकॉम देखने वाला फीलिंग देती है वो शो। और देन इवन देयर इज अ शो टीवीएफ पिक्चर्स, इवन द सीजन 1, आई हैवंट सीन द सीजन 2 पिक्चर्स की, मगर जो सीजन 1 है, देयर आर सो मेनी गुड ह्यूमर, लाफ आउट लाउड मोमेंट्स इन द शो। तो फिर भी कमिंग बैक टू द सेम थिंग, दैट वहां पे क्यों चल रही है, वो लोग क्यों लिख रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं, वो टॉपिकल भी है। टीवीएफ का एक रीजन है, टीवीएफ का मुझे लगता है कि जो भी टीवीएफ के मेंबर्स हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, और वो वही कंटेंट, वही जो चीज़ उनके साथ हुई है, वही लिखते हैं। पंचायत के जो राइटर हैं, जो फ़िल्म मेकर हैं, वो एक गाँव से ही हैं। उनको पता है कि वहाँ उनके साथ क्या-क्या हुआ है, वही इंसिडेंट को वो यूज़ करते हैं अपने इसमें। टीवीएफ पिक्चर्स में भी देखिए, वो जो स्टार्टअप का चीज़ है, टीवीएफ वाज़ आल्सो स्टार्टअप। टीवीएफ भी स्टार्टअप था, वो भी पिच करते थे, वो भी ऐसे इवेंट्स में जाके पिच करते थे अपने शो के बारे में। उन्होंने एमटीवी के पास गए थे वो, टीवीएफ में जो पहला स्पूफ उन्होंने जो वीडियो अपलोड किया था, दैट वाज़ अ पिच टू एमटीवी। Yeah. एंड दे रिजेक्टेड इट। सो ये सब चीजें उनके साथ हुई हैं। गुल्लक में भी अगर आप देखेंगे, मुझे 100% पता है, ये चीज जो है हर मिडिल क्लास घर में होता है, क्योंकि द राइटर वाज आल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड ही नोज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैसे बचाना। फिर वो जो नोक झोंक है हस्बैंड एंड वाइफ के, उन्होंने भी अपने घर में देखा। हम इसलिए हम सब कनेक्ट कर पाते हैं। द रिलेटिविटी फैक्टर इज द रीजन व्हाई TVF and other like comedy collective like TVF, people are liking those content produced by them. Right, and when you see Gullak, you are so, like you're saying, Gullak में तुम्हें अपना बचपन याद आता है, कुछ याद, you know, अपने neighbors, अब खुद का घर, you know. So, and again, it's coming back to also there's sincerity in what they're doing, right? They're not just, when you try to make somebody laugh desperately, then you do things like thespian and lesbian. But when you're actually coming from a space of, like you said, Saurabh, that they all belong to that lifestyle. So they're writing from experiences, and that's what makes it funny. That's one part of comedy. The other part of comedy is what we see in movies. Like, I'm going to mention a movie here, which is actually, the theme is extremely regressive. But I must say, I have to confess, I've seen this multiple times, and if it comes, I'll watch it again, and I laugh every time. And again, it's the situation. It's a movie called No Entry, and I laugh because I know it's. That's again an Anees Wazmi film. Yes, exactly. So, and he brings in, and the way they do all their shenanigans, and in the end, of course, he puts in that emotion when Isha Deol finds out what's going on. But then they go back to it is regressive. It's not even politically correct to say, oh, lovely, but I'm saying it, that that movie makes me laugh because, again, the writing, the timing, the actors, Anil Kapoor, and what's his name, Fardeen Khan. He's not even known as a great actor or anything, but he did so well in that. Whatever he was required to do, he did. And that little chap who keeps going around with, he goes around with Bipasha Basu and everything. So everything works, you know. It's so funny. So you have that kind of comedy, and then you have the TVF kind of comedy. So, a couple of things I'd like to state here. One is, TVF takes me back to the Doordarshan era, where everything was so clean, so simple, and yet it was delightful, delectable. You enjoyed it, it was engaging, and it sucked you in. You wanted to watch one more and another and another. The TVF writers have the ability to do that. They have the ability to attract the audiences. So here is the one which is a little badly timed now, because I should have said it earlier when Saurabh was speaking, but I didn't want to interject. But he said, how TVF was a startup at that point of time and they were being rejected or whatever was happening. It was a startup then, and it is a successful one now. And I would like to state, and this is why it's a little bad timing. Like I said, it should have happened at that time. But dime a dozen films
is also a startup. Wait and watch. Oh, absolutely. Dhawan Dozen फिल्म्स को तुरंत श्रोताएं ट्यून इन करें सेटल प्लग इन सैनी साहब आवाज की दुनिया के दोस्तों हम लेकर आए हैं स्टार्टअप Dhawan Dozen सौरभ, उस दिन हम बात कर रहे थे, आपने ये टॉपिक छेड़ा था थोड़ा सा पिछले पॉडकास्ट में, तो आपका क्वेश्चन था हैव वी स्टॉप लाफिंग एट आवरसेल्व्स, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड व्हाटएवर, हैव पीपल, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे ना आशु जी कि इज इट, डू वी लाफ लेस बिकॉज it's so simple to be happy but so difficult to be simple? So I think simplicity is the most complex thing to achieve. वाह 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 मैं लिख लेता हूँ आशु जी ये डायलॉग मैं यूज करूंगा आपको क्रेडिट भी नहीं दूंगा नहीं तो मजाक कर रहा था क्रेडिट हमेशा देना जिसको क्रेडिट। मैं जोक मत रहा था मगर ये बहुत बढ़िया चीज आपने बोली जो क्रेडिट, हाँ मुझे मालूम है आप जोक मार रहे हैं, बहुत ही, वही तो कह रहे हैं ना कि इट्स सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। ये ट्रेलर में जाएगा ये पक्का ट्रेलर में जाने वाला है हाँ the complexity thing you said आशु जी राइट। But that is the essence of life also. You try to make things. So हम लोग जब स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं ना तो ऊपर लिखते हैं keep it simple stupid and then we start complicating it by putting in plot points here, plot points there and make it a little more tricky and थोड़ा twist डालते हैं और फिर भी जो सिंपल सी चीज होती है वो इतना अच्छा अपील करके चली जाती है। जी बिल्कुल। I have one more question. Shoot your question. The last question is, do you think जो comedy actors हैं, the actors who do comedy, we always tend to have this tendency to say them as comedian. उनको buffoon, वो निचले दर्जे का बहुत लोग उनको ट्रीट करते हैं. Even there used to be the award category best comedian. तो अब जाके एक्टर इन अ कॉमिक रोल हुआ है. ये एक रीजन है क्या कि हमने हमेशा कॉमेडी को एक निचले दर का जॉनरा माना है, इसलिए कभी उसको रेस्पेक्ट नहीं दी है. बिकॉज ऑफ दैट वो कॉमेडी मरा है, कॉमेडी क्राफ्ट हुआ है. सो यू नो पहले वाली फिल्मों में जब पुरानी फिल्मों में होता था कि कॉमेडी जो है वो बफूनरी ही माना करते थे कि ये बफूनरी किया ये कर सकता है कैमरा के सामने खुलेआम और एक्टर्स जो हीरोज वगैरह होते थे वो बफूनरी नहीं करते थे और सो एज टू से तो इसीलिए कॉमेडी के लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विद देयर स्पेसिफिक ट्रेट्स एंड स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशंस लिखा जाता था जो ऑडियंसेस को राइटर्स को एक्टर्स को उनको लगता था हाँ ये कॉमेडी है बट धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ है और मुझे लगता है ये एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द मेन प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ द फिल्म also started doing comedy and they started excelling in comedy और मैं एक बहुत solid चीज बोलता हूँ and I think you will agree to it and this is my finding that every actor aims to be a star, right? And he gets accepted. The moment he gets accepted, he becomes a star. But the day he starts doing comedy, he becomes a superstar. Like Akshay Kumar. Everybody. Now you see Amitabh Bachchan before Mr. Natwarlal and after Mr. Natwarlal. Dharminder before to after doing comedy. Govinda before and after doing comedy. Anybody, every single actor, even Hema Malini, before and after doing comedy. Whether it's Sita Geeta, whether it's Sholay, Sanjeev Kumar, when he started doing comedy, any actor you see, the moment that actor starts doing comedy easily, he becomes a superstar. But till that time that the actor cannot do a comedy role properly, he remains a star. You know, you have said everything that I would have wanted to say. I just want to take you back to that time, Saurabh. Buffoonery, you brought up that topic, that word. An actor like Rajinder Nath, every time he came on screen and we were watching films with my mother and everything, she would always say, "Arey, ye aake buffoonery karega." Couple of times he made us laugh, and he's also done some negative roles, and he also played a spy, a CBI detective or something in a movie called Amne Samne, while he was doing the comedy. But every time he came, they made him a buffoon. And let me tell you, to remind you, one other actor who you missed out, and I thought he was excellent in comedy, and that was Om Prakash. Yeah, but again, भेड़ चाल ना हर फिल्म में उनसे वही उसी तरीके से बात करवाते थे ना.
वही उनका तरीका, उनका तकिया कलाम ही उनका डायलॉग डिलीवरी बन गया था ना. When he tried something different in movies like बुड्ढा मिल गया and all, which were not comedies, which were thrillers, I really appreciated him. But otherwise, he was saying the same way, and that became तकिया कलाम. It was really funny. Like the that scene itself is a great example. वो जो प्यार किए जाए में हाँ जो वो scene सुनाते हैं, वाह वाह प्रोडक्शंस. हाँ 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 प्रोडक्शंस ही प्रोडक्शंस और जो वो कहानी सुनाते हैं एक दूसरे को. And see the expression of that actor. और ओम प्रकाश एग्जैक्टली महमूद को इतनी तालियां मिली, इतनी तालियां डिजर्वेडली फॉर दैट. बट इफ यू लुक विदाउट ओम प्रकाश जी's reactions in that scene would have flopped. नलिनी जी, दिलीप साहब की कॉमेडी और उनकी टाइमिंग, Oh gosh, and he started way before any of these actors, any of these. yeah, There is a scene in राम और श्याम जिसमें वो प्राण को मारने वाला एक सीन है. उससे पहले एक सीन है जहाँ वो जो मुंशी जी हैं उनको मिमिक करते हैं दिलीप साहब. इतना बढ़िया है वो सीन. What about when he tells Leela Mishra, "Mummy, my tractor is not working." But Nalini ji just now said one thing which I was about to say. is उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश ने थ्रिलर फिल्म में किया and I liked him in that. These actors who are who used to be called as buffoon or comedian, they were superb when they did against the type. Yeah. Like महमूद साहब did कुंवारा बाग. जॉनी वॉकर आनंद में जो उनका कैरेक्टर है कोई भूल नहीं पाएगा. Lovely performance he did. Superb. Even Johnny Liver in Ishq, वो जो second half में जो emotional scenes करते हैं, he was brilliant in that. Even I'm hearing good reviews about Kapil Sharma's performance in Zugato. और एक actor है, it is not a Bollywood, he is not a Bollywood actor, but still नागेश करके एक comedian है, जिनकी फिल्में हिंदी में बनती थी और महमूद साहब वो रोल प्ले करते थे. नागेश did a film called अप्पू राजा, कमल हसन की, अपूर्व सौंदरंगल. उसमें उन्होंने विलन का रोल किया and he was brilliant in that film. Again against the type. So these actors are brilliant actors. yeah, because and I'll tell you, all of these guys who have done comedy, when they have the opportunity of doing something emotional, they can bring tears into your eyes. And I doff my hat to every single one who would have been called buffoonery, because what you're saying, Saurabh, is the ability to laugh on themselves. That starts with trying to be a buffoon for yourself also. How many people have the courage to make a buffoon of themselves? And these guys would do it in front of the camera. And this is the ability of every single comedian. They're such brilliant actors that when it comes to do something emotional, which they choose not to do, they make you laugh most of the times. But when they choose to do an emotional scene, they will tear your heart out. And that is why I say that when a star can do comedy, he becomes a superstar. Comedy is the most difficult thing to do, and if you can crack that, that's what makes you a good actor. And every so-called quote unquote comedian, we are typecasting them. Most of them are crying inside. I mean, and they can still make you laugh. So those are acting chops. So everybody can't do comedy. No. But most people can make you cry. Yes. Comedy is the toughest thing. If you can't do it, I mean, I don't think you're a complete actor. So for me, Govinda is a complete actor. Like all these other names that we've been talking about, they may not have got the opportunities, but thankfully Govinda got the opportunity to do both things. He did negative roles. He was so good, not negative exactly, but he did roles where he had to pick up or lick or pick up Shakti Kapoor's chappals in that movie called Khuddar. He did a negative role in Shikari, Nalini ji. हाँ, शायद मैंने देखी नहीं है. He was a villain. He got Filmfare also. I haven't seen Shikari, but in Khuddar he played a cop who was, I was just, he took my breath away. That scene in Kuli number 1, I can never forget, and I believe they were talking about it also in some interview. I don't know where I read that when he's pretending in the house, when they're inside the house and they know Kader Khan is going to come with Shakti Kapoor. तो वो वहां पे जो scene है जहाँ पे गोविंदा anyway is a good mimic, जहाँ वो संजीव कुमार जी की, देवानंद की और पता नहीं किस किस की नकल करते हैं ना, वो सब उधर ही किया था सेट पे. वो कुछ लिखा ही नहीं था ना.
वो खुद ही किया था उन्होंने. He ended up with Sanjeev Kumar. He मेरा स्टैंडर्ड. उसका खुद पे खुद स्टैंडर्ड आ ही जाएगी. तो मेरे लिए तो सच में उनका लहजा भी इतना अच्छा है. इवन इमोशनल सीन, नलिनी जी, इवन इमोशनल सीन, वो एक फिल्म उन्होंने की थी हत्या. हाँ, वो खुद की फिल्म थी. इट वाज सो ब्रिलियंट, लाइक मतलब बार-बार मैं ब्रिलियंट वर्ड यूज कर रहा हूँ मगर एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट है. आपको रोना आ जाएगा वो सीन देख के. सो ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर. सो 100 बात की एक बात आपने नलिनी जी कही और आपने फ्लो में कहा कि कॉमेडी इज नॉट अ सिंपल थिंग टू डू, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी फाइंड कॉमेडी बीइंग मेड सो लेस इन इन हिंदी फिल्म्स. आशु जी, जो फिल्म वाले हैं ना, यू नो व्हाट दे से, अ लॉट ऑफ दीज मेकर्स एंड ऑल, दे से कॉमेडीज तो चलती नहीं है ना. दिस इज द एक्सक्यूज. नहीं, वो चलती इसलिए नहीं है क्योंकि आप कॉमेडी जो बनाने की कोशिश करते हो वो कॉमेडी बनती नहीं है, तो लोग हंसते नहीं है, तो इसलिए चलती नहीं. एग्जैक्टली, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आई मीन इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज टू से ना कि कॉमेडी चलती नहीं है. और स्लैपस्टिक बनाने के लिए भी टैलेंट चाहिए ना आशु जी. बिल्कुल. आई थिंक वी डन इनफ. इट्स अ लॉन्ग एपिसोड ऑलरेडी. आई थिंक वी शुड. One more point I wanted to make, that I love silly comedies, and और silly comedies भी silly self aware comedy जहाँ लोग बोल रहे हैं कि हम कॉमेडी कर रहे हैं, आप हंसिए. A film like Airplanes, that is one of my favorite comedy movies, Airplanes. I haven't seen that. Who's Yeah, you should watch it. It's ultimate comedy. There's a scene in that film, वो प्लेन में है वो लोग और एक कैरेक्टर को हार्ट अटैक कुछ होता है, तो एरोस्टेस आके बोलती है कि ओ माय गॉड, ओ शी हैज एन अटैक, इज देयर एनी डॉक्टर. फिर एक बंदा को दिखाते हैं जो सेटोस्कोप पहन के ऐसा बैठा है और उससे आके पूछती है आर यू डॉक्टर, और वो सेटोस्कोप उठा के बोलते हैं यस आई एम अ डॉक्टर. You're talking about self-aware comedy. There is a Hindi film which I like, which comes under this genre. It's called Picha Karo, Pankaj Parasar. हाँ, हाँ. I like that film. अच्छा. No, 99 also is very good. 99. Yeah. I saw 99, Rajan DK's. Rajan Diggi. And is that the right film, Naya Daur, with Neetu Singh and Rishi Kapoor, and वो गाड़ी खरीदने की पूरी कहानी है दिल्ली में. नया दौर. Is it called Naya Daur? दो दूनी चार. दो दूनी चार. Sorry. दो दुनी चार. हाँ. Simple, lovely film. Very lovely film with a message. Again, these little films, no, with messages. Like I love that film. No, I'm waiting for more films like that. Amit Mishra की और Amit Sharma की, sorry, जिसमें नीना गुप्ता और गजराज राव. हाँ, बधाई हो. बधाई हो. बधाई हो. मतलब कितनी सुंदर फिल्म थी, कितनी सुंदर फिल्म. नलिनी जी, और एक सवाल था, लास्ट सवाल. हाँ बोलो. लास्ट सवाल ये है कि इफ यू हैव टू चूज, आप एक डीवीडी शॉप में गई है. जी. आशीष जी, आप एक डीवीडी शॉप में गए हैं, कैसेट वाली दुकान में गए हैं, और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप सिर्फ 3 सीडी ले सकते हैं, 3 कॉमेडी पिक्चर के सीडी ही ले सकते हैं और कुछ ले ही नहीं सकते. तो आप कौन सी 3 हिंदी फिल्में चूज करेंगे? इफ यू हैव टू पिक. हाँ, तो मतलब जो मैंने देखी हुई है, ऑब्वियसली उसी की बात हो रही है ना, जो देखी हुई है. अरे नहीं, आपकी फेवरेट. आपके ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ 3 ले सकते हैं कॉमेडी फिल्में सीडी. अच्छा. अंगूर होगा. अंगूर, चुपके चुपके. मेरे लिए तो अंगूर, चुपके चुपके. अंगूर, चुपके चुपके. और तीसरी वाली होगी या तो जाने भी दो या अंदाज अपना अपना. आई थिंक अंदाज अपना अपना. Okay, I will ask the same question in a different way. आप एक लॉस्ट आइलैंड में हैं and you have this option to pick 3 comedy Hindi movies उस आइलैंड में देखने के लिए. So what you will choose? Which movies you will choose? अच्छा, आइलैंड का एटमॉस्फेयर एंड ऑल दैट. ओह, वेरी एक्सोटिक. I will take Welcome, the first one. I love it when that Majnu bhai makes all those paintings. ये बहुत हंसी आती. पहली वाली वेलकम. और मैं लेके जाऊंगी, मैं मुन्ना भाई MBBS लेके जाऊंगी. मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म, बार बार देखने का मन करता है. और आइलैंड इज एग्जॉटिक. तो कॉमेडी और कौन सी देखा, बड़ा मुश्किल हो रहा है चूज करना. 3 तो मैंने आपको बोल दी. डीवीडी वाली वो रिपीट नहीं कर सकती ना मैं यहाँ पे. कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, तो फिर अंगूर. तो मेरा तो क्या है ना, मैं ऑलरेडी आइलैंड में रहता हूँ. मुंबई इज एन आइलैंड.
बेशक बहुत भीड़ है, लेकिन इतने भरे शहर में भी अकेला महसूस करता हूँ कभी कभी। तो मेरे लिए तो चुपके चुपके, मेरे लिए अंगूर और हेरा फेरी। अब सवाल पूछने वाला भी तो जवाब दे। अच्छा, मैं अपना भी बोलना था ना, मैं तो भूल ही गया। अब तुम जवाब दो। हाँ, आई विल बी छोटी सी बात। अच्छा, हाँ, छोटी सी बात, गोलमाल। एंड गोलमाल ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल, एंड दूल्हे राजा। हाँ, दूल्हे राजा। और वो कौन सी फिल्म है, वो भी इतनी सुंदर फिल्म है जिसमें वो आते हैं ना, भाटवडेकर। उत्पल दत्त, हिज नेम इज भाटवडेकर। वो रंग बिरंगी, रंग बिरंगी, वो भी कितनी स्वीट फिल्म है। कथा भी कितनी अच्छी फिल्म है, साई परांजपे की। कथा इज सो प्रिटी। साजन, साजन चले ससुराल। ससुराल, वो भी बहुत मजेदार है। पर दूल्हे राजा, हाउ कैन आई फॉरगेट जश्न बदूर, माय फेवरेट। यस। हाँ, चश्मे बदूर। बट सौरभ, वो जो दूल्हे राजा है ना, तुम मेरी तरफ हो उसकी तरफ। उंगली उसकी तरफ है, दिल आपकी तरफ है सर। बहुत हंसी आती है उसको। और फिर वो कहता है, वो एक दिन वो चेंज लेने आता है भागता हुआ, गोविंदा कहता है 100 रुपए का छुट्टा है, तो ऑटो को देना है। तो कादर खान उसको पैसे नहीं देता है, समथिंग समथिंग। वो बोलता है आपका बुरा टाइम आने वाला है। तो देयर वन डायलॉग नो सौरभ, कादर खान से कि तू क्या मेरे से 100 रुपए इसे ही दे तुम्हारे पास। he says something like, कंगाल कौन है, तुम होगे, मेरे पास तो पैसे। I don't know what he says, but I can't forget. दूल्हे राजा is so funny. And when उसमें और एक सीन है, असरानी, असरानी वो सामान लेते हैं ग्रोसरी शॉप से, और वो बिस्किट लेता है, तो दुकानदार बोलता है अरे कुत्ते वाली बिस्किट है, तो क्या हुआ, फिर वो खाता है और वो कांस्टेबल को भी देता है, ले तू भी खा मगर भौंकना मत। और मैं कभी एक अपनी लाइन बोलता हूँ, जब TO2 होता है, DO2 होता है, तो जियोगू। क्यों नहीं होता? और वहां पे उषा किरण अपने नाक के ऊपर उंगली रखती है कि उसको बदबू आती है। ओह हे भगवान। मैं फिर अमिताभ बच्चन उसमें बोलता है ना, और मैं ये हूं, तो कहता है वो तो तुम हो, कहने में क्या जाता है, और तुम प्रशांत हो, तो कहने में क्या जाता है। मैं तो ये भी बता दूंगा। वो कहता है लेकिन मैं तो प्रशांत ही हूँ ना। बोलता है कहने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है, मैं तो वो भी बता दूंगा। ओह गॉड, हे भगवान। यार कॉमेडी वापस ले आओ, लेकिन प्लीज आपके हाथ जोड़े लोग। अच्छी कॉमेडी लिखिए और वापस लेके आइए। And on that note, I think we shall say good night. Yes, and I hope the listeners have enjoyed it, and yes, we look forward to engaging with them again. Good night, everyone. Good night. Please watch out for our next podcast of our startup to become something which is already startup. And laughter is a serious business, so writers, makers, do take laughter seriously. Absolutely. Yes. चलिए, good night. Good night, Saurabh. Good night, Ashuji.